सो फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इन शॉर्ट यू कैन से बीपीआर। ये टॉपिक के बारे में हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपका सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 ओएमएसएम सेक्शन बी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर है, एंड यहाँ पर इन सीएमए फाइनल ग्रुप 3 स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी ये टॉपिक है इन सेक्शन बी ऑल्सो, राइट। सो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये हमेशा एग्जाम में रिपीटेडली आता है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो या फिर फाइनल। एंड इन फाइनल दिसंबर 2018 एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आया था, व्हिच इज कैरीज अप टू 6 मार्क्स, राइट। एंड हाई चांसेस आर देयर इट मे रिपीट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. So let's discuss what is business process re-engineering. See, business process re-engineering is nothing but ये एक one type of comprehensive and radical redesign होता है of business processes to achieve significant improvement in 4 important things. And what are the 4 important things? One is cost efficiency, second quality, third speed, and fourth customer satisfaction. 4 इंपोर्टेंट थिंग्स को इंपोर्टेंट देता है बीपीआर. कॉस्ट एफिशिएंसी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए. नाउ प्राइमरी गोल क्या होता है बीपीआर का? बीपीआर का प्राइमरी गोल होता है टू रीथिंक एंड रीडिजाइन द वे वर्क इज डन टू क्रिएट मोर वैल्यू फॉर द कस्टमर व्हाइल रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. एक तो कॉस्ट को रिड्यूस करता है एंड सेकेंड रीथिंक एंड रीडिजाइन करता है द वे वर्क इज डन टू क्रिएट मोर वैल्यू फॉर द कस्टमर. नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैडिकल रीडिजाइन? सी, रैडिकल रीडिजाइन इज नथिंग बट ये एक फंडामेंटल एंड रैडिकल ओवरहॉल ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस होता है. It's not about making small adjustment but rethinking and restructuring process from the ground up. And BPR का फोकस होता है on meeting customer needs and expectation more effectively by understanding and aligning processes with customer requirements. Organizational can deliver better value. And end-to-end process perspective क्या है? BPR looks at business processes from end to end, considering the entire workflow rather than isolated task. ये BPR जो होता है वो पूरा बीट बाय बीट एंड टू एंड कंसीडर करता है एंटायर वर्कफ्लो को rather than just isolated task. This helps identify areas for improvement and optimization across the entire value chain. बीपीआर का एम होता है टू मेक प्रोसेस मोर एफिशिएंट, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी स्टेप्स एंड रिड्यूसिंग रिडंडेंसी एंड स्ट्रीमलाइनिंग वर्कफ्लोज. दिस ऑफन लीड्स टू कॉस्ट रिडक्शन व्हाइल इंप्रूविंग द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेसेस. एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली बीपीआर ऑफन इन्वॉल्व्स leveraging technology to automate and enhance processes. This can lead to significant efficiency gains and cost savings. BPR performance measurement करता है. कैसे? Now BPR includes the establishment of performance metrics to monitor the success of the redesigned processes. This ensures that the organization continue to meet its strategic objective and identify areas for continuous improvement. In summary, you can say business process re-engineering is a strategic approach that goes beyond incremental improvement, aiming for a radical transformation of business processes to enhance efficiency, reduce cost, and align with the organizational board or strategic level. Right? So, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो BPR is like a makeover. कैसे? Suppose, imagine your daily routine is like your appearance, right? BPR is like giving yourself a total makeover, changing your hairstyle, clothes, and even how you do things. Think of your process like cleaning your room. BPR is not just creating value, it's like throwing out things you don't need and organizing the rest so you can find them easily.
कितना सिंपल होता है बीपीआर. बीपीआर इज लाइक अरेंजिंग योर रूम सो योर फ्रेंड्स कैन फाइंड थिंग्स विदाउट आस्किंग यू. इट्स मेकिंग लाइफ इजियर फॉर एवरीवन बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड सिंप्लीफाइंग. ये बीपीआर जो है वो आपका रूटीन को फिक्स करता है. इफ योर मॉर्निंग रूटीन इज स्लो, बीपीआर इज लाइक फिगरिंग आउट हाउ टू गेट रेडी फास्टर विदाउट मिसिंग एनीथिंग. इट्स फाइंडिंग शॉर्टकट्स टू मेक योर रूटीन स्मूथर. BPR is like adding cool gadget to your routine. If a new tool can help you do things better or faster, you will want to use it, right? That's what BPR does for business with technology. Okay. And BPR involves talking to your family or roommate about your routine. Their suggestion can make things better. In a company also, employee ideas are valued because they know their work best. Clear? And BPR making your value happen. If your goal is to save money or get things done quicker, in that case BPR helps you do just that. It's not changing things randomly, it's changing things in a way that helps you reach your goal. So BPR always focus oriented and BPR always improving. कैसे ना, BPR is not a one time thing, right? It's like always looking for way to do things better. If you find a faster way to get ready in the morning, you will use it, right? BPR is like that, but in a companies everybody's task also completed by BPR. In simple term, you can say BPR is like giving your daily routine super smart upgrade. It's about being efficient, making things simpler, and always looking for way to make life better, just like upgrading your routine to make your day awesome. Clear? ये है बीपीआर का एग्जाम्पल. बट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमको कैसे देखना है? सी, फर्स्ट यू कैन राइट बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग रेफर्स टू फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल redesign of business process to achieve improvement in critical measures of performance such as cost, quality, service, speed and customer satisfaction. ये सबसे important point है. In contrast, the concept of Kaizen, which involves small incremental steps towards gradual improvement, re-engineering involves a giant leap. Then in second line you can write, it is the complete redesign of a process with an emphasis on finding creative new way to accomplish an objective. Finding a new way to accomplish an objective. In third line you can write, it has been described as taking a blank piece of paper and starting from scratch to redesign a business process. Rather than searching continually for minute improvement, re-engineering involves a radical shift. जहाँ जहाँ important word है वहाँ पर मैं underline करता हूँ. Radical shift in thinking about how an objective should be met. And in four line, re-engineering prescribes radical, quick and significant change. वही सब को repeat किया है. Admittedly, it can entail high risk, but it can also bring big rewards also. These benefits are most dramatic when new models are discovered for conducting businesses. Right? So this is it all about business process re-engineering. In short, you can say BPR. You just need to revise it at least 2 to 3 times with understanding each and every words involved in business process re-engineering so that you can easily write in the examination. And most importantly, business process re-engineering हमेशा एग्जाम में आता है repeatedly, so high chances are there it may come in your upcoming examinations, right? So now this is it all about business process re-engineering. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.